Very interesting. और साहेब आ जाओ Good evening, ladies and gentlemen. My name is Farhad Khan, and on behalf of Chicago Lahore Sister Cities Committee, I welcome you all this evening for a very special purpose. Easter and spring, symbols of life, rejuvenation, new beginnings and growth. As the world was celebrating the advent of spring and the beauty of new life by spending time with families and friends, the celebrations in Lahore were turned into tragedy. The joy and laughter of innocent children became a monstrous and frightening dance of death. The vibrant colors and sweet fragrance of spring became dark clouds of doom and the foul stench of death. By misguided and misinformed individuals who preferred death over life. They chose death not only for themselves, but inflicted the terror of death on unsuspecting, innocent residents of the city. Several lives were lost, while many were injured physically and wounded and scarred spiritually as well as emotionally. We are here tonight to heal the wounds and scars. Every one of us present here tonight needs to rise to the challenge and speak up and say, this is unacceptable. It is unacceptable in Lahore. It is unacceptable in Brussels. It is unacceptable in Paris. It is unacceptable anywhere. It's important to give this very profound and deep message. It's a war against all those folks who are trying to destroy humanity. Humanity has to be preserved with all its values. Every human life has to be respected. We care about every human being who is on any part of the earth. And that's what Ms. Lisa Conkey and Mayor's Office and Governor's Office and Secretary of State's Office is working hard to make sure that whoever walks into Chicago, into state of Illinois, is treated well. And that's the message we take out to the world as Americans, that we care everywhere. So with that, I think that our sympathies and prayers are, of course, with people of Lahore who actually lost their own relatives, their brothers and sisters. I mean, people who really got hurt. I mean, those are the ones who really got affected, but we really share their pain and we sympathize with them. And we really want to stand together
as a whole world with them. That we are with you, people of Brussels, we are with you, people of Paris. And with that, I would like to invite Honorable Consul General of Pakistan, Faisal Niaz Tirmizi Sahab, to say a few words. Jesse White, my friends, Pakistani community, especially Lisa from the mayor's office, thank you so much for such lovely flowers. In fact, mayor was one of the first person to call me that morning, and I was deeply touched by his personal gesture. And of course, he sent a letter to Chief Minister. So thank you so much for that. Thank you for being such a great friend. And of course, all representatives of different sister cities who are with us to share this pain. But I've always believed that something pains, because Lahore is considered to be the heart of Pakistan. And once on the 27th, when they hit the city, and especially children and women, I was really touched. I was deeply personally hurt, because when it happened on 16 December 2014, when these forces of bigotry, hatred, darkness hit 142 innocent children in a school in Peshawar, we said never again. To people of Brussels, to people of Istanbul, to people of Paris, to people of Ankara, and to all those cities who have faced this onslaught of relentless hatred, which frankly, I can't understand what is the motivating factor which prompts someone to kill innocent children playing in a park. But moments like this is a chance which brings us together as individuals, as families, as nations, and as human beings, that this is a common menace that we all have to fight together. And of course, I am pretty resolute that that day is not far off when our children and our children's children, and for all generations, will live in a more peaceful world. Thank you so much, Mr. Bhatt Sahab. You have been a great source for the Pakistani community in Chicago, and I'm really grateful for organizing this event. Thank you so much. And to the Consul General Tirmizi for all that he has done for the Pakistani community here in the great state of Illinois. I serve as the Secretary of State, and I've had that position for the past 17 and a half years, and my mission is to help make the roads of Illinois the safest ever. But deep in my heart, I have love in my heart for my fellow man and woman. I don't care how you spell your name. I don't care where you come from, what your religious background is. You're a human being, and you're important to me. In the African American community, they have an organization that says, Black Lives Matter. Well, every life matters to me. And more importantly, our children, because one day, these young people are going to help run the world. The young people who lost their lives could be our doctors, our lawyers, our teachers, our ministers. It's important for us to do all we can to make sure we do all we can to help these young people to grow tall and straight and put something between their ears every day other than scalp. We're talking about knowledge, and that will carry them far. And teach them to love their fellow man and woman and never ever dislike anyone because of race, creed, or color. I believe that when you could speak someone else's language a little bit, eat their food, learn their dance, and learn about their culture, it makes for a great society. It's a great experience for us all. And of course, I'm saddened by the fact that we've lost these wonderful human beings. And I'm elated by the fact that I'm here with you. You have a heavy heart just like I do. And you are going to leave this place with a better attitude towards your fellow man and woman. And you're going to do a little bit more than what you've done in the past to make sure that your young people are not
taught hatred or dislike for someone because of how they spell their name or how they came into this world. Of the Sister City, of leadership at the Sister City Committee, so we thank you for all your work. You work closely with the city, does an excellent job for all cities that are the 28 sister cities. And and Consul General Faisal is also a close friend of ours. We work closely with him in the mayor's office, and like he said, the mayor wanted to call him personally as soon as he could, wanted to be sure we got a letter out and send his condolences and bring the flowers and just do, it's the least we can do for our friends of Pakistan. So I'm happy to be here on his behalf. And I'll read the letter real quick that the mayor sent to Chief Minister Sharif. As mayor and on behalf of the city of Chicago, I'd like to express my deepest condolences to the people of Lahore on the loss of innocent lives at Gulshan-e-Iqbal Park. The people of Chicago stand together with the citizens of Lahore as we reflect on this horrific act of terror. As sister cities, Chicago and Lahore are both family and friends. In the wake of this tragedy, Chicago remains as committed as ever to Lahore. My heart goes out to the families of the victims. The resiliency of the Pakistani people will triumph in this difficult time. Please know that our thoughts and prayers are with you, Lahore, and the Islamic Republic of Pakistan. Sincerely, Mayor Rahm Emanuel. Thank you, everyone. I really want to acknowledge the media because they came together at such a short notice, which is really, really commendable. So please, I would like to thank Rana Javed Khan of Pakistan News, Khwaja Tariq of Urdu Times, Nadeem Malik of Sadai Pakistan, Ansar Rizvi from Safira Pakistan. And I would also like to acknowledge a very special guest who's visiting from Pakistan, Mohammad Tayyab. He works with Javed on Pakistan News. So welcome to Chicago. I hope we made a good impression. And my other comment was that, and as much as divisions, as many divisions as our community, sometimes they're portrayed or perceived divisions. Obviously, we are gathered here and with a noble cause. I'd like to commend Dr. Tariq Butt, chair of the Lahore Committee, and also our Consul General of Pakistan for hosting this event. It's very important that we remember our victims. Congressman Rush could not be with us, but he wanted to make sure that I bring his greetings, condolences, and also pay tribute to the families of the victims. I have his message that I'd like to read to Lahore chapter of Chicago Sister International Committee and also Consul General of Pakistan. I am deeply shocked and outraged to hear that the series of terror attacks in the city of Lahore caused a large number of casualties. Such inhuman and despicable terrorism could never be justified for any reason, and I strongly condemn such a horrific act of extremism and terrorism. It is difficult to find the words to express the depth of my feelings for you at this sad time. My deepest condolences go to all of the victims and their bereaved families, in my heartfelt sympathy to those who were injured in the attacks. From the words of our Lord and Savior Jesus the Christ, let not heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, we often feel helpless. Just know that God can speak the words that calm the sea, still the wind, and ease the pains. So lean on Him, and you will never walk alone. On behalf of my wife, Carolyn Rush, and all the citizens of the 1st Congressional District of Illinois, I extend my most heartfelt prayers to the families in this difficult time of their lives in their hour of bereavement. Sincerely, Bhavya Rush, Member of Congress. Thank you.
I'm very honored to be with the Pakistani American community tonight. I'm just here to read a quick short statement from Governor Bruce Rauner. To the Pakistani American community, as Governor of the state of Illinois, I'd like to extend my deepest condolences to the victims and families affected by the terror attack in Lahore, Pakistan over the Easter weekend. Terrorism and deliberate acts of violence have no place in today's society. I strongly condemn this act of cowardice that claimed the lives of dozens of women and children and injured hundreds more. With the recent attacks in Paris, Brussels, and now Lahore, we must work together to fight against these acts of evil. I am deeply saddened by this horrific attack. Diana and I offer our deepest and heartfelt condolences to the Pakistani American community, both in Illinois and abroad. Sincerely, Bruce Rauner, Governor of the state of Illinois. Thank you. As the chair of the Penitent for Israel Sister City Committee, the Jewish population of Chicago, the Israelis in Chicago, the Israelis in Israel certainly know about terror. I've been in Israel when there's been a bombing a few doors away, and it's an unbelievably shocking experience, and the people in Israel and many other places experience it over and over and over, and it's important that we figure out how to get around this. So I would look forward to working with the Lahore Committee and the Casablanca Committee and others, because there's so many of the sister city committees now have been victims of terror. And there's anything that all of us who are related to those who are victims of terror can do together would be a wonderful thing. And so I think there's strength in numbers, and I hope that we can talk later about what Lahore and Casablanca, Israel and other places that we're related to, Paris, Brussels, can do together soon. Good evening. It is an honor to be here on behalf of the Attorney General, and I'm sorry I have a letter. We sent a letter to the Consul General this week, but she's here in spirit, and she's very, very close to the Pakistani community. We were very close with the consulate and with the community. So thank you very much. जी आज जुमे के दिन शिकागो सिस्टर सिटीज़ और काउंसलेट जनरल के ताउन से आज बहुत बड़ा एक विजिल हुआ है यहाँ पे, जहाँ के चीफ गेस्ट थे जनाब जेसी वाइट जो इलिनॉय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे डेनिस जंग, गवर्नर ब्रूस राउनर के, और लीज़ा कॉने के, मेयर रैम इमानुअल की, और अटॉर्नी जनरल लीज़ा मेडिकन के रिप्रेजेंटेटिव, जिन्होंने मुख्तलिफ पैगामात दिए, और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी और दूसरी सिस्टर सिटीज़ पोलैंड की, शिकागो की और चेक रिपब्लिक के वो लोग सारे यहाँ पे आए थे, जिन्होंने सॉलिडारिटी दी। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज गया कि ये जो लाहौर का सानिया था उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को यकजा कर दिया है, और उनका मुसम्मम इरादा है कि दुनिया से ये जो दहशत गर्दी की लानत है इसका ख़ात्मा किया जाए, जो हमारे आने वाली नस्लों को टारगेट कर रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा जनाब तारिक भट्ट साहब का, जो लाहौर चैप्टर के चेयरमैन हैं शिकागो इंटरनेशनल के। उन्हीं ने ये इनिशिएटिव लिया था, और बहुत बड़ी तादाद में डिवॉन, जैसा कि आपको मालूम है, ये शिकागो का दिल है और ये पाकिस्तानी का सबसे बड़ा मरकज़ है। तो आज यहाँ पे एक इवेंट हुआ और बहुत अच्छा इवेंट हुआ, और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ आपकी वसासत से, आपका वकार अली ख़ान साहब का, सफ़ीर पाकिस्तान का, कि वो हर मौके पे कम्युनिटी का जो भी यहाँ पे इवेंट होता है उसकी बहुत कवरेज करते हैं, और ये कलीदी किरदार अदा करते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पे यकजा करने के लिए और इनको पाकिस्तान के साथ करीब लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं इंसार आपका और वकार अली ख़ान सफ़ीर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया और आपने हमेशा हर फंक्शन को कवर किया। आज का जो फंक्शन था, आज का जो कैंडल लाइट्स का फंक्शन था, उसमें यौम यकजहती लाहौर जो सानिया हुआ उसके लिए आज सारी मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग आए, सिटी स्टेट के जितने रिप्रेजेंटेटिव थे सब तशरीफ़ लाए, उन्होंने इज़हार यकजहती किया, और हर एक का एक ही एम था कि दुनिया से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ दिया जाए। और पाकिस्तान में जो हुआ हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को जैसे भी हो सकता है गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि दहशत गर्दी के जितना भी हो सकता है काम करें, उसको जड़ से उखाड़ दें।
थैंक यू वेरी मच। जी, लाहौर में जो अफसोसनाक सानिया हुआ है उसके असरात दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं उनमें महसूस किए गए हैं, और शिकागो के पाकिस्तानी मुख्तलिफ नहीं हैं उससे, उनके दिलों पे गहरे रंजो गम के असरात थे, जिसके इजहार के लिए आज यहाँ शिकागो में एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेसी वाइट भी तशरीफ़ लाए, मेयर के नुमाइंदे थे, गवर्नर के नुमाइंदे थे, कांग्रेसमैनों के नुमाइंदे थे, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं की कसीर तादाद की शिरकत थी। शमें रोशन की गई। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सफ़ीर पाकिस्तान और जियो पाकिस्तान का, टीवी का, और आज एक बहुत ही पुरवकार और संजीदा तकरीब मुनक़िद हुई लाहौर के बम ब्लास्ट के हवाले से और उसके शोहदा के लिए और उस किस्म की तशद्दुद की कार्रवाइयों की मज़म्मत करने के लिए, और उन तमाम ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी करने के लिए जिनके लवाहिकीन और जिनके लोग इससे मुतासर हुए। आज इस तकरीब की खुसूसियत ये थी कि ये पहले तो शिकागो लाहौर सिस्टर कमेटी और काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान फैसल नियाज़ तिरमिज़ी की कोलैबोरेशन से हुआ। ऑनरेबल काउंसिल जनरल यहाँ आए और इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल थे, मुख्तलिफ़ मुल्कों के, मुख्तलिफ़ शहरों के, और तमाम ही डिसेंडेंट और जो जहाँ जहाँ से एंसेस्ट्री उनकी आई हुई है, यूरोप के हों, जूइश हों, मुस्लिम हों, क्रिश्चियंस हों और हिंदू हों, किसी भी मज़हब के थे, वो सब यहाँ मौजूद थे। उसके अलावा जो इसकी ख़ास बात थी वो ये थी कि सबसे हाईएस्ट सेकंड ऑफिशियल इलिनॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑनरेबल जेसी वाइट ख़ुद तशरीफ़ लाए और उन्होंने बहुत ही अहम किस्म के पैगाम दिए, और तमाम लोगों ने इस बात का इरादा किया कि उन तमाम लोगों की जो तशद्दुद में शहीद हुए हैं उन सब के लिए दुआ करें और उनके ख़ानदानों को अल्लाह ताला सब्र अता करे। और उसके अलावा इस बात का पुरज़म इजहार किया गया कि चाहे वो वाक़या लाहौर में है या इस्तांबुल में है, अंकारा में है या बेल्जियम में है या पेरिस में है, इसमें हम जो हैं उन तमाम वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। और मुसलमान कम्युनिटी का जो एक लीसा रॉबर्ट्स हैं कासाब्लांका मोरक्को की कमेटी की, और वो बहुत ही इंसान दोस्त हैं, उन्होंने भी इस वाक़े की तशद्दुद की मज़म्मत की। और उसके अलावा और भी लोग जो मुख्तलिफ़ सिस्टर सिटी कमेटियों के चेयर थे, उन सब ने मिलकर इस बात का इरादा किया कि इस किस्म के वाक़यात से निमटने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम का जो है फ़ुक़दान उसको ख़त्म करेंगे, जो अंडरस्टैंडिंग है मुसलमानों की उसको बेहतर बनाएंगे, उनकी इमेज को भी बेहतर बनाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा इससे मुतासर मुसलमान हो रहे हैं, और इस बात को समझने की कोशिश की जाए कि हमें ही सबसे ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और इस लानत को ख़त्म करना है। तो शुक्रिया बहुत बहुत। जी, इस वक्त हम यहाँ शिकागो दीवान एवेन्यू पे पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद जमा हुई है। यहाँ पर हम लाहौर में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उसकी मज़म्मत के लिए जमा हुए हैं, और हम तमाम लोग इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ऐसे वाक़यात को रोकना चाहिए, और दुनिया में जहाँ भी ये वाक़यात हों दहशतगर्दी के, उसकी हम सब पुरज़ोर मज़म्मत। आज यहाँ लाहौर शिकागो सिस्टर सिटी इंटरनेशनल और पाकिस्तान काउंसिलेट ने एक तकरीब का एहतमाम किया है जिसमें लाहौर में जो दहशतगर्दी हुई है और जो मासूम बच्चों और औरतों की जानें गई हैं इकबाल पार्क में, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और हम चाहते हैं कि सारी इंसानियत खुशहाली से, जो वी आर ऑल वन चिल्ड्रन अंडर वन गॉड। तो आज कैसाब्लांका की सिस्टर सिटी और अमान जॉर्डन की सिस्टर सिटी और 10-15 और सिस्टर सिटी से मिल के यकजहती का मुजाहरा किया है, और सब ने कंडेम किया है इस बारबैरिक और शर्मनाक हरकत को जो लाहौर में हुई है। जहाँ भी दहशतगर्दी होती है, चाहे अंकारा में हो, चाहे इस्तांबुल में हो, चाहे पेरिस में हो, चाहे बेल्जियम में हो, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। और आज हम लोग सब यहाँ पे जमा हुए हैं शिकागो में कैंडल लाइट विजन के लिए। लाहौर के जो हादसा हुआ इकबाल पार्क लाहौर में जो सानिया हुआ, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और बताने के लिए कि ये कितना
अफसोसनाक वाक़या था जिसकी हम यहाँ पे जमा होकर पुरज़ोर मज़म्मत कर रहे हैं। Pakistani American community got together today in Chicago to pay tribute and hold a candlelight vigil for the victims in Lahore attack. They also included Brussels and Paris in their prayers. पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा यहाँ पे और भी लोग मौजूद थे, बहुत ही लोगों की रिप्रेजेंटेशन थी दूसरे कम्युनिटीज़ की। गवर्नर के ऑफिस से मैसेज आया था, अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से मैसेज आया था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ख़ुद तशरीफ़ लाए थे। बहुत काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की इस प्रोग्राम में और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हुआ ये, और इस बात को दोहराया गया और इस बात पे इसरार किया गया कि हम लोगों को एज़ इंसानियत को पहले रखना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात और ऐसी वारदातें फिर ना हों और मासूम और बेगुनाह लोगों की जानें ना जाए। जी नाज़रीन, मैं हूँ अंसार रिज़वी, नुमाइंदा सफ़ीर पाकिस्तान GOTV। इस वक्त मैं दीवान एवेन्यू शिकागो में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर शिकागो लाहौर सिस्टर सिटी और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान शिकागो की जानिब से लाहौर इकबाल पार्क में जो दहशतगर्दी का सानिया हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत के लिए यहाँ पर एक दुआया तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद शिकागो ने शिरकत की। मेयर शिकागो के नुमाइंदे, गवर्नर के नुमाइंदे और उसके अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। अंसार रिज़वी, सफ़ीर पाकिस्तान, GOTV शिकागो।